Okay, so as you had asked for the problem for the proving of this buoyant force as the formula of V rho G. So as I said, first of all, you have to understand the basic concept. When you will understand the basic concept, you will be able to establish the relation over there. So when we are talking about the buoyant force, that is equals to V rho G. So what does this V stands for? This rho stands for, and this G stand for. So as you all know for this thing, that this V is the volume of the liquid displaced. Liquid displaced. Please remember this thing. इस चीज को याद रखना है. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा. हम ये क्यों इस पे स्ट्रेस क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं लिक्विड में, तो कितना पोर्शन उस ऑब्जेक्ट का सबमर्ज हो रहा है उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि कितना लिक्विड वहां पर डिस्प्लेस होगा. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द होल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस द लिक्विड ओवर देयर. it is only the portion which been submerged in the liquid that only displaces the liquid. ये चीज हमेशा याद रखना है. जितना पोर्शन हम लोग किसी लिक्विड में सबमर्ज करेंगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा. Next, we have to see for the rho, that is the density of the liquid for which we are talking about. And the next thing is this, that is the acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity. So these are the three basic things which you need to remember over here. The V is the volume of the liquid displaced by the submerged portion of the object. This rho is the density of the liquid for which we are talking about. And this G is the acceleration due to gravity. Now, अब देखो यहाँ पे जब हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑब्जेक्ट व्हिच वी आर सबमरींग इन द we are putting it in the liquid, then the pressure which is going to experience by the object through the liquid. तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेशर एक्सपीरियंस करेगी. तो ये प्रेशर किधर किधर से एक्सपीरियंस करने वाली है? सो सी ओवर हियर, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द प्रेशर फ्रॉम द टॉप. It is going to experience the pressure from the sideways, this side and this side, this side and this side, as well as the pressure it is going to experience from the bottom. It is going to experience the pressure from the base or the bottom over here. So over here we are going to understand a very basic thing, and on that one we will see, or we will go for the calculation of the pressure. तो देखो यहाँ पर जब हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो जैसा कि दिख रहा है कि चारों तरफ से प्रेशर यहाँ पर अप्लाई हो रही है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस साइडवेज के प्रेशर को कैंसिल कर देंगे. We will cancel it out. Why it is so? It is because the amount of pressure from both the sides will be considered to be as equal. दोनों ही साइड से जो प्रेशर अप्लाई हो रही है उस कंटेनर में वो इक्वल प्रेशर अप्लाई हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ अमाउंट ऑफ लिक्विड सेम है. अगर हम लोग इस साइड के लिक्विड की क्वांटिटी को देखें और हम लोग इस साइड के लिक्विड की क्वांटिटी को देखें, दोनों ही साइड के लिक्विड की क्वांटिटी सेम होने के कारण वी विल अज्यूम दैट द अमाउंट ऑफ प्रेशर द ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम द साइडवेज is equal over there. So we will not consider it out because that is a condition of a balanced force. यानी इन दोनों से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो बैलेंस्ड फोर्स है. अब कौन सा फोर्स बच गया? एक फोर्स जो ऊपर से अप्लाई हो रही है और एक फोर्स जो नीचे से अप्लाई हो रही है. ऊपर से जो फोर्स अप्लाई हो रही है that is due to the little bit amount of water which is present at the upper portion of this container. And from the bottom, the pressure which has been applied, that is because of the large amount of water which is present at the base of the container. तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर हम लोग ये एजम्पशन कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया जाता है किसी लिक्विड में, at that very time the amount of water at the top is comparatively less in the comparison to the amount of water which is at the base over there. So over here we will observe that from the base or at the base of the object is experiencing more force than to the force experienced by its upper part. यानी उसके ऊपर वाले हिस्से में कंपैरेटिवली कम फोर्स अप्लाई हो रही है
उसके बेस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बेस में ज्यादा लिक्विड है, जिसके कारण जो अपथ्रस्ट या जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो ज्यादा हो। अब देखो, हम लोगों ने थ्रस्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है। थ्रस्ट क्या होता है? इट इज जस्ट अ परपेंडिकुलर फोर्स. So when we are talking about the force which is acting at this particular place in the downward direction, we will say that it is a down thrust. It is down thrust. और जो फोर्स यहां पर अप्लाई हो रही है उसे हम लोग कहेंगे अप थ्रस्ट. इट इज अप थ्रस्ट. Now, right now, I had said this thing that at the top, the amount of force is less. The amount of force is less because the amount of water present at the top is less. So, if we compare the amount of force from the base to the top, we will observe that the upthrust is greater over there. And you all had studied this thing under the condition of an unbalanced force, that the resultant action used to be observed in the direction of the greater force. तो इसको एक बेसिक प्रिंसिपल से समझते हैं हम लोग. जो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के कंडीशन में होती है, मान लो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है से एज 10 न्यूटन, और उसके अगेंस्ट में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रही है से एज दैट इज 25 न्यूटन. सो द डाउन थ्रस्ट, दिस इज द डाउन थ्रस्ट and this is the up thrust. This is the up thrust. So over here the up thrust is more than to the down thrust. Hence, the resultant action will be observed in the upward direction. It will be observed in the upward direction, and that will be counted to be as the resultant force, and that is 25 Newton minus 10 Newton, and that will be 15 Newton, and it will create some kind of work over there, or it will cause some kind of work. Now, this is the basic principle, and on this basic principle, we are going to put the values and then solve for the numerical explanation. Okay, so let's see for this one. So over here, as you can see from this figure, you can consider the height of the base as h2 and height of the upper surface as h1. Now, a certain amount of pressure is caused at the upper surface. Say as this is P1. This is P1, pressure 1. And the pressure which is acting at the base of the container. Say as this is P2. Okay. Now, when we are going for the calculation of the pressure over here, we know this thing that the pressure means the liquid pressure, or the pressure, simply if I will say, pressure is equals to force upon area. This is the basic principle which we can say over here. So when I will go for the calculation of P1, जब हम लोग P1 का calculation करेंगे, तो हम लोग वहां पे लिख सकते हैं F1 by A1. This is the first calculation. So over here, if I will go for its calculation, I can say by cross multiplying, F1 is equals to P1 into A1. Take it as equation 1 and keep it. Now, similarly, you go for the base, the P2. So P2 is equals to, again, F2 by A2. So it will be over here as F2 equals to P1 into A2. Sorry, P2 into A2. So make it as equation 2. Now, as just now I had explained that the upthrust from the bottom is more comparable over there. Means it is more over there. So what is the effective force? What is the effective force? The upthrust which we will call to be upthrust. किसको बोलेंगे? तो upthrust ऊपर की तरफ लगने वाली है. So that would be the difference of F2 minus F1. So if I will go for this calculation, then I will go to P2 into A2 minus P1 into A1. ठीक है, यहां तक की कैलकुलेशन समझ में आ गई. अब यहां पर अगर हम लोग इसके वैल्यू को प्लेस अप करते हैं, अगर हम लोग इसके वैल्यू को अगर हम लोग प्लेस अप करेंगे, तो यहां पर क्या निकल कर आएगी? देखो, प्रेशर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब लिक्विड प्रेशर की बात आती है, तो वो क्या होता है? H rho G, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है. So over here, if I will write, then for this equation, what I am going to write, I will say for this one, pressure 2 means liquid pressure यहाँ पे लग रही है, तो H2, so that would be H2
into H rho G, rho into G, into area 2 minus over here, if I will go for this one, it will be H1 into rho into G into A1. Now, in this particular concept, if I will see, then I will find that the density, acceleration due to gravity, and the area, all these things are common for both the sides. Density of the liquid same है, acceleration due to gravity भी same है, और area भी same है, क्योंकि तुम लोग देखो upper surface और lower surface दोनों की area same है. So we can say that they are common. So I can take it as rho, G, and A. And then I will go for it as H2 minus H1. So what does this represents? This represents the height of the object. This H2 minus H1 is the height of the object. So I can write it over here, rho G A into H. Say as capital H I'm writing for the height of the object. Now, if you will go for the calculation of this area into height, what does this goes? That is the volume. So we can say over there rho G V, or we can write it as V rho G, and that is the upthrust or the buoyant force which we use to calculate. Hence, the buoyant force is equals to volume of the liquid displaced by the submerged portion of the object into the density of the liquid which is going to displace and the acceleration due to gravity over there. Okay, so I hope that now it is clear to you. Is it clear? Have you understood this? Yes, sir. Okay, yes. Now, any other doubt? Any other doubt? Okay, so one problem has been asked. Okay, 1 minute. Yes, Vidya had asked one question, that if W is less than the buoyant force, or this is less than that, then what is the relation over there and what does this means? Okay. देखो फिर से ये जो कॉन्सेप्ट है, तुमने जो ये क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. 1 मिनट, जस्ट I will share a slide. Yes, with this one I will explain for that one. Over here, जब हम लोग फ्लोटेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट के फ्लोटेशन का मतलब होता क्या चीज है. हम लोग कब कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रही है या फिर कोई ऑब्जेक्ट सिंक हो रही है, इसका बेसिक सा एक फेनोमेना पहले समझ लो. प्रिंसिपल अगर समझ में आ जाएगी तो जो कॉन्सेप्ट या फिर जो अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं वो भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. तो यहां पर हम लोग यही चीज डिस्कस करने वाले हैं, कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है और कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक करती है. तो सिंक होने का सिचुएशन या फ्लोट होने का सिचुएशन क्या होता है, तो पहले ये स्टेटमेंट समझ लेते हैं और फिर उस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे. Objects float in water when their weight is balanced by the upthrust force from the water called as the upthrust. ठीक है? The object will sink if the weight is greater than the upthrust force. ठीक है? ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस तुम लोगों को एक्सप्लेन करेगी फ्लोटेशन को. अब इसको हम लोग समझते हैं केस वाइज और कंडीशन वाइज, ताकि तीनों केस तुम लोगों को समझ में आ जाए. then that would be much easy for you to understand. So just a minute, I will share a white screen, and with that one I will explain. Okay, so you take 3 different conditions. With these 3 different conditions, I hope that you will be able to understand the concept of the change in the weight and the condition regarding to the flotation or the sinking. So suppose here there are 3 containers. Okay, and these containers been filled with same liquid, say as water. It has been filled with water. In all these 3 conditions we are taking water. So just a minute, let me just color it out. So here is water, here is also water in the same amount. The size of the container is same, even though it doesn't affects over there, but then also I'm taking the size of the container same. So this is the second container been filled, and here the third container. So just a minute. Okay.
So this is the third container. It has also been filled with water now. Now what you have to go for, you take different objects. Okay, say as for example, first object you had taken over here. The second object, you take it over here, means just for that one minute, I will take it only. And the third object says you have taken over here. Now, these three objects which we are taking over here, they have the same volume. Okay, they are having same volume, but the density is changed. The density is different over there. So again, I'm saying they are having same volume over there. Their mass is also same, but the density is different. Density is different. All these three things having three different densities. As mass is same over here. Okay. Now, if I will go for the conditions, what are the conditions what we are going to discuss over here? The first condition, I had taken this object and submerged it in the liquid. So it is like here. It is like here. The second one I had taken, it is like this. And the third one I had taken, and it is like this. Okay. So there are three different situations which we can observe over here. यहाँ पे हम लोग को तीन अलग-अलग conditions या तीन अलग-अलग situations देखने को मिल रहे हैं. अब देखो इन तीनों के बेसिस पर हम लोग एक इजी सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे समझ में आएगा कि किस तरह से ये रिलेशन एक रिलेशन दिया जाता है जो कि तुम लोगों के बुक में भी दी हुई है. तो वो क्या क्या रिलेशन है जो तुम लोगों की बुक में भी देती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेट इज इक्वल्स टू द buoyant फोर्स, वेट इज ग्रेटर देन टू द buoyant फोर्स एंड वेट इज लेस देन टू द buoyant फोर्स. ओके, सो ये तीनों कंडीशंस को हम लोग इस बेसिस पर समझेंगे. किस तरह से समझना है उसको देखते हैं. सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं केस 1 में. सपोज दिस इज केस 1. This is I taking as case 1. इसको केस 1 लेते हैं. यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ये ऑब्जर्व हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये लिक्विड के अपर सरफेस में फ्लोट कर रही है. दिस इज अ प्रॉपर सिचुएशन ऑफ फ्लोटेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग दैट दिस इज अ प्रॉपर सिचुएशन ऑफ फ्लोटेशन. हम लोग चाहते हैं ऑब्जेक्ट इसी तरह से फ्लोट करे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ शिप और अ बोट इसी तरह से फ्लोट करे. Under this condition, we used to observe that the weight is less than the amount of buoyant force experienced over there. So इसका मतलब क्या है? एक सिंपल से लॉजिक से समझो. वेट हम लोगों को पता है एक्ट करती है नीचे की तरफ, वेट एक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन और buoyant force एक्ट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में. सो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर अगर मेरा अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा मेरे वेट से, तब वो ऑब्जेक्ट इजीली फ्लोट करेगी. इसका एक और रिलेशन भी हम लोग समझेंगे कुछ देर में. पहले दूसरे केस में चले आते हैं. दूसरे केस को हम लोग समझते हैं जहां पर कि हम लोग केस 2 देखते हैं. तो यहां पर केस 2 में हम लोगों को क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि this object is not on the surface of water, but it is near to the surface of water, and it is not completely sink down. So under this condition, you will observe that the weight of the object is equals to the buoyant force over there. So again, when we are going for the relation, we know this weight used to act in the downward direction and upward forces acting in the upward direction. So both the forces are equal over there. Hence, it made it balanced. Now, if I will go for the third condition, if I will go for the case 3 over here, then under this situation, I will observe that the weight is greater than to the buoyant force over here. Now, again, you all know for the basic relation that the weight used to act in the downward direction, which is much greater over here than compared to the buoyant force which was acting. Hence, what happened? The object had sink down. Now, if I go for another relation to this, अगर हम इसी के साथ एक और रिलेशन लेकर आते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो buoyant force है इसका कैलकुलेशन होता है V rho G, जहां पर V है
the liquid displaced, the volume of the liquid displaced, rho है density of the liquid, and g है acceleration due to gravity. Now understand over here, under all these three conditions, we will observe, just a minute, let me just clear out this thing, then it will be easy. I will get a little bit of space. 1 minute. Yes. So under all these conditions, V rho G is there, and over here V rho G is there. Now, as I was saying that in all these conditions, this density and acceleration due to gravity is constant. They both are constant over here. Okay, because as I said, I had taken the same liquid. I'm not changing the liquid over there. And we are taking the experiment, or we are doing this experiment at a particular place on the earth. Hence, the acceleration due to gravity is also same. So when these two components are same, then which factor is over there which is responsible to make the object float or sink? Okay, but before that, one more thing I want to make this clear. Both these cases, case 1 and case 2, is considered under the flotation. ये चीज समझो, ये जो case 1 और case 2 है, दोनों ही कंडीशन समझा जाता है फ्लोटेशन के रूप में ही. ठीक है, दोनों ही कह सकते हैं फ्लोटेशन ही है, दोनों में ही फ्लोटेशन है. बस केस 3 जो है वहां पर हम कहेंगे कि इट इज बीन सिंक डाउन, वो डूब गया है. ठीक है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर फ्लोटेशन हो रहा है, वो पानी के अपर सरफेस में मौजूद है. और जब हम लोग इस कंडीशन में देखते हैं तो भी वो पानी के सरफेस के आसपास मौजूद है. इट इज नॉट बीन ड्रॉन डाउन, वो नीचे की तरफ नहीं चला गया है. तो दोनों ही कंडीशन, तो इसीलिए प्लीज बुक में जब लिखी हुई रहती है कि दोनों ही सिचुएशन फ्लोटेशन का है, तो कंफ्यूज मत हो जाना. दोनों ही असल में फ्लोटेशन का है, लेकिन केस 1 is a very good opportunity for us to do several kinds of work. हम लोग चाहते हैं कि हम लोग केस 1 को अचीव करें. हम लोग जब भी फ्लोटेशन में जाते हैं तो हम लोगों की ये चाहत होती है कि हम लोग केस 1 को अचीव करें, क्योंकि उससे मेरा काम आसान हो जाएगा. क्योंकि हम चाहते हैं कि जो शिप या बोट बना रहे हैं, इट यूज्ड टू सेल ऑन द वाटर, इट डजंट गो अंडर द वाटर. अगर थोड़ा भी अगर अंदर चला जाता है या ज्यादा पोर्शन उसका अंदर चले जाता है, तब फिर वहां पर हम लोगों को उस तरह की इजी या कन्वीनियंस नहीं होगी. बट इवन दो वी कैन डू सो. So please remember this thing, both the case 1 and case 2 are the situation of flotation, but the difference is that the case 1 is more choiceable or more desirable for us. Okay, now as I was coming to this topic, as I said over here, the density and acceleration due to gravity is constant. So which is the factor which is determining whether the object is going to sink down or it is going to float? So obviously that would be the volume of the liquid. ठीक है, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है. तो देखो, अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस कर देती है, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में अगर लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, देन व्हाट वी यूज्ड टू ऑब्जर्व, वी यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम, द buoyant फोर्स विल बी ग्रेटर ओवर देयर. ओके, एंड अगर मान लेते हैं कि लिक्विड इक्वल अमाउंट के, मतलब वॉल्यूम जो है वो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर के अगर वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर देती है, तब वहां पर भी हम लोग एक फ्लोटेशन का सिचुएशन देखेंगे. लेकिन अगर वो बहुत कम अमाउंट के लिक्विड को डिस्प्लेस कर पाती है, तब ये क्या होता है, वो सिंक डाउन हो जाता है. एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं. हम लोगों ने इसे पहले भी पढ़ा हुआ है. You all know this question was also there in your book. Why do a nail made up of iron get sink down, whereas a big ship made up of iron floats on the water? So what is the basic difference between that? The basic difference is this thing only. जब तुम एक आयरन नेल को लेकर पानी में डालते हो, then what you used to observe? You observe that it displaces less amount of water. Means the volume of water is approximately, or it is displaced less than to the weight of the object. Because of that, what happens? It used to sink down.
But when you go for a boat or a ship, you observe that the base of the boat or a ship is used to be like this. It has a greater volume at the base. Because of this, what happens? It can displace more water. So if it is displacing more water, means the volume of water is displaced more over there. Because of that, what will happen? It will experience more amount of buoyant force. And that is the reason why it can float on the surface of water. Okay. Now I hope that it is clear the topic which you had asked for. सर अगर नेट फोर्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो तीनों का क्या सिचुएशन होगा? ओके चलो ठीक है, नेट फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो अभी अभी तुम लोगों को हम ये समझा रहे थे कि जब हम लोग इन तीनों ही केसेस को लेते हैं तो दो फोर्सेस वहां पर ऑब्जर्व हो रही हैं। एक फोर्स है जो कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और एक फोर्स है जो अपथ्रस्ट है। तो अगर हम लोग यहां पर देखते हैं एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, से एज दैट इज एक्स विच इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, से एज इट इज y, ओके, एंड दैट इज द buoyant force, that is the buoyant force. So under this situation, when we are talking about the object is in this case, then my upthrust is greater over there, वो बड़ा है। और जैसा कि हम लोगों को पता है रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो हमेशा बड़े वाले फोर्स से माइनस करते हैं छोटे वाले फोर्स के लिए। अभी अभी हम कुछ देर पहले भी जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम बताए थे, सपोज मान लो कि इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लेकर देखते हैं, सो दिस इज 10 न्यूटन एंड से एज दिस इज 15 न्यूटन, से एज दिस इज 15 न्यूटन. So what would be the resultant force over there? That would be 15 Newton minus 10 Newton. So which will be 5 Newton. And the 5 Newton will be acting in which direction? It is acting in the upward direction. Hence, it will balance this object on the surface of water. And if I am coming to this situation, then say as for example, the weight is 10 Newton and the buoyant force is also 10 Newton. It is also 10 Newton. Hence, we are observing a balanced situation. And when there is a balanced force, then no resultant action used to be observed. Hence, the object can be observed on the or around the surface of the water. But if I come to this situation, so say as this is the weight of the object is 10 Newton, but the buoyant force is 6 Newton over here. So what will happen? Again, the resultant force would be 10 Newton minus 10 Newton minus 6 Newton, which is 4 Newton, but in which direction? It is in the downward direction. Hence, what will happen? The object will sink down under the water. Okay? Now is it clear? Sir, in the book, here in case 1, it is given that the net force will be 0 of case 1. Case 1, for which situation it has been given for that one? So that weight is less than the buoyant force. Case 1, the net force. Weight, okay. See, as I said in the beginning, देखो हम पहले भी बता रहे थे, देखो इसीलिए हम तुम लोग को अभी कुछ देर पहले बताए थे कि केस 1 और केस 2 दोनों ही फ्लोटेशन के लिए कहते हैं। तो देखो अभी अभी हम तुम लोगों को इसमें बताए हैं, ये वाला सिचुएशन में बताए हैं कि नेट फोर्स 0 हो जाएगी, रिजल्टेंट एक्शन 0 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन फ्लोटेशन को बताता है। इस चीज को क्लियरली समझो, दोनों ही सिचुएशन हम लोगों को ये बता रही है कि ये फ्लोटेशन है, ठीक है। और जब भी हम लोग लॉजिक ऑफ फ्लोटेशन डालते हैं, जब हम लोग लॉजिक ऑफ फ्लोटेशन डालते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि नेट फोर्स 0 हो जाती है। लेकिन हम तुम लोगों को अभी भी सेपरेट करके भी बताए हैं कि ये वाली हम लोगों के लिए ज्यादा डिजायरेबल होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको अचीव कर लें। अगर हम लोग इसको अचीव कर लेते हैं तब वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के लिए काम करेगा, ठीक है। अच्छा चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, तब तुम लोगों को थोड़ा सा और क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक शिप है या एक बोट है, वो कुछ लोड लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। अगर लोड का अमाउंट चेंज होगा तो उसका जो पोजीशन होगा लिक्विड में वो भी चेंज होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये लोड लाइटर है तो वो क्या होगा, वो पानी के ज्यादा अपर में रहेगा, ऊपर सरफेस पे रहेगा, क्योंकि वेट वहां पर कम है। लेकिन अगर वो लोड ज्यादा हो जाए
तो वो क्या होगा, वो पानी में थोड़ा सा ज्यादा डिप कर जाएगा, ठीक है। बट दोनों ही सिचुएशन तो फ्लोटेशन होगा, तो लॉजिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां पर नेट फोर्स 0 है। बट हम लोगों को जब एक्सप्लेनेशन में आते हैं, जब हम लोग उसको समझने के लिए आते हैं, तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस को समझना है। फिर से बता रहे हैं, ये दोनों ही फ्लोटेशन है, दोनों ही केसेस फ्लोटेशन है। और जब भी हम लोग फ्लोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग ये कहेंगे कि नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स वहां पर 0 हो जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? Thank you, sir. Okay, okay. Yes, is there any other doubt, any other problem, anything else? Yes, sir, I am sending a picture. Okay, please send it. I will see for that. What is that? Okay. So, what is the Yes. difference between these two pictures? If everything is same between the two objects, volume and density, everything is same. Okay, okay, okay. So under these two conditions, if you will see, then as I said earlier, that if you will go for these two figures, this figure and this figure means case 2 and case 3. So as you said that the volume is same and the mass and densities, everything is same. Is it that? Yes. Yes, sir. Okay, so under that condition, we can say, as you had given for the situation, for according to your figure only, I'm saying this is your first figure, like this certain something like this is your figure. So under this condition, when in both the situation, the mass, density, volume, all the things are same for the object, then we can say over there that the liquid which are present in both the containers would have different density. दोनों कंटेनर में जो लिक्विड मौजूद है उसकी डेंसिटी अलग अलग है। जो पहले वाले कंटेनर में जो लिक्विड मौजूद है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। Say as this is density 1 and say as this is density 2. So over here we can say the density of the first liquid is greater than to the density of the second liquid. Because of this, what happens? The first liquid is exerting more buoyant force in the upward direction than compared to the second one. As the weight is same, देखो दोनों ही कंडीशन में तुमने बताया कि वेट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों ही कंडीशन में लिक्विड का उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग है, एक में पोजीशन अराउंड 2 ये है और एक में पोजीशन अराउंड 2 ये है, तो उस सिचुएशन में हम लोग ये बोलेंगे कि दोनों ही लिक्विड से लगने वाली जो अपथ्रस्ट है वो चेंज है। इस वाले में लिक्विड से लगने वाली अपथ्रस्ट ज्यादा है और इस वाले लिक्विड से लगने वाली अपथ्रस्ट कम है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट इन बोथ द लिक्विड्स। ओके, तो अगर लिक्विड भी सेम रखेंगे तो ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा कंडीशन हो सकता है, लेकिन फिर ऑब्जेक्ट में तब वहां पे कुछ चेंजेस आ जाएंगी, उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आ जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि एक चीज होती है कि जैसे कि एक शिप या बोट जो होता है वो जनरली तो फ्लोट करने के लिए बना हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक शिप या बोट कभी सिंक नहीं कर सकता है, वो सिंक कर जाएगा। अगर मान लो कि एक बोट है और उसको बनाया गया है एक सर्टेन अमाउंट के लोड को कैरी करने के लिए, तो देखो इसका वॉल्यूम तो सेम है, इसका वॉल्यूम सेम होगा, इसका एवरेज डेंसिटी अगर निकालेंगे जिस ऑब्जेक्ट का है वो भी सेम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लोड अगर बढ़ा दें, अगर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब क्या होगा, जो वेट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, इट विल सिंक डाउन ओवर देयर, ठीक है। तो वो उस सिचुएशन में हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, देखो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन के बेसिस पर हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर समझना होता है कि उसका पोजीशन क्या होगा या उसका कंडीशन क्या होगा, ठीक है। सर जो buoyant फोर्स, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर जब buoyant फोर्स लगेगा बोट पे तो वो बोट का वॉल्यूम पे डिपेंड करके लगेगा, मतलब वेट जो ऊपर से डालेंगे लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं, दोनों पे डिपेंड करेगा। देखो जब भी हम लोग एक शिप या बोट बनाते हैं तो उसको बनाया इस तरह से जाता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट के वेट को कैरी किया करे,
और उसके बेसिस पर ही डिटरमाइन होता है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका बेस का वॉल्यूम कितना होगा, उसके साइज का वॉल्यूम कितना होगा। हम वेट को डिटरमाइन करके ही वॉल्यूम को डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पर एक डिसाइड होती है कि कितना बड़ा शिप बनाना है या किस किस साइज का शिप बनाना है। अब जब हम लोग ये सब चीज पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं, उस वॉल्यूम टू वेट का रेशियो हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया, तब हम लोग उस शिप को या उस बोट को पानी में सेल होने के लिए दे देते हैं। अब अगर उस वेट से ज्यादा वेट अगर चले जाता है तो भी प्रॉब्लम है, अगर उस वेट से बहुत कम वेट हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग की क्लास बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, जस्ट आई एम टेलिंग दिस थिंग, कि अगर मान लो कि हम लोगों की कोई शिप या बोट है, वो खाली अगर समुद्र में सेल हो रही है, तब वहां पर वो लोग उसमें पानी भर लेते हैं या सैंड भर लेते हैं ताकि उसके वेट को बैलेंस किया जा सके, ताकि वहां पर उसको सेल किया जा सके प्रॉपरली। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर शिप्स होते हैं, उसमें जब एम्प्टी शिप्स जाती हैं तो उसमें पानी या फिर सैंड भर लिया जाता है।